सुनिए भाई, गवर्नमेंट प्रोग्राम और स्कीम रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, तुम लोग जो लगे सजेस्ट किया करो, मुझे हर आदमी हर तरफ नजर आता। देखिए, गवर्नमेंट स्कीम से ये पता चलेगा कि हमारी जो सरकार है वो कौन कौन सी स्कीम लेकर आई है और कौन सी स्कीम का क्या फायदा हमें होने वाला है। इसलिए हम जब भी पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे तो उसमें हम गवर्नमेंट स्कीम को जरूर लाएंगे। क्यों? क्योंकि गरीबी दूर किससे होगी? एम्प्लॉयमेंट से। तो गवर्नमेंट स्कीम क्या करती है? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके गरीबी को दूर कर देती है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट स्कीम से ये सारी चीजें चलती हैं। तो गवर्नमेंट स्कीम जैसा चाहती है वैसा आगे इस चीज को बढ़ा सकती है। तो गवर्नमेंट प्रोग्राम एंड स्कीम रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, इसमें है आत्मनिर्भर भारत। तो पहली स्कीम जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है आत्मनिर्भर भारत। और आत्मनिर्भर भारत तो चौथी पंचवर्षीय योजना में ही हो जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं। तो अब जो प्रेजेंट सरकार है इसने कुछ स्कीमें ऐसी लॉन्च की है जिसका नाम ही रखा है कि देखो, टाइटल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। टाइटल से पता चलता है हम करने क्या वाले हैं। ठीक है? तो मेन टाइटल होता है। कोई पिक्चर कब चलती है? जब उसका टाइटल अच्छा होता है। अंदर क्या है ये बात की बात है। कोई बुक कब बिकती है मार्केट में? जब उसका टाइटल अच्छा होता है, खबर पृष्ठ। अंदर भले कुछ ना हो बट खबर पृष्ठ अच्छा हो तो बिकेगा। पेपर कब बिकता है? जब उसकी हेडलाइन अच्छी होती है। ठीक है? तो ये है बड़ा रूल है टाइटल। तो लिखो आत्मनिर्भर भारत। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी on 12th May announced an economic stimulus package for 20 lakh crore, estimated at 10% of GDP, 10% of GDP, toward building an Atmanirbhar Bharat, toward building an Atmanirbhar Bharat, are a self-reliant and resilient India, are a self-reliant, resilient and resilient India, resilient and resilient India, resilient in India. आगे पे लिखो, the package is to cater to various sections, the package is to cater to various sections including cottage industry, cater to various sections including cottage industry, MSME, MSME, laborer middle class, laborer middle class, and various indigenous industries, and various indigenous industries, indigenous industries. अगला पॉइंट, the aim is to make the country, the aim is to make the country and its citizen independent and self-reliant, independent and self-reliant in all senses, in all senses. Five pillar of Atmanirbhar Bharat were outlined economy, were outlined economy, infrastructure system, vibrant demography and demand, vibrant, vibrant, vibrant demography and demand. हो गया ये योजना? थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, आईएएस के लिखने आंसर। विब्रेंट डेमोक्रेसी एंड डिमांड, डेमोक्रेसी एंड डिमांड, ये तो हमारी हो गई आत्मनिर्भर योजना। अब हम आते हैं सेकंड पे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। गरीब कल्याण अन्न योजना, it is a part of प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, it is a part of प्रधानमंत्री
गरीब कल्याण पैकेज PMGKP, 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 PMGKY, P की जगह Y योजना है, KY ये होगा, इसमें लिखो। इट इज ए पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, इट इज ए पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज launch on 26 March, launch on 26 March 2020, 2020 to help the poor fight, to help the poor fight the battle against COVID-19, against COVID-19. It is nodal ministry is the Ministry of Finance. Nodal ministry is the Ministry of Finance. Paragraph बदल के. The scheme is aimed at providing. The scheme is aimed at providing each person who is covered under the National Food Security, who is covered under the National Food Security Act 2013 with an additional 5 kg grain, additional 5 kg grain, 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 are free in addition to the 5 kg of subsidized food grains, Public Distribution System PDS. The Prime Minister Street Vendor Atmanirbhar. The Prime Minister Street Vendor Atmanirbhar निधि, निधि PM स्वनिधि, PM स्वनिधि and urban affair, urban affair on 1st June 2020, 2020 as a central sector scheme, as a central sector scheme with the following objectives, with the following objectives: to facilitate working capital loan, to facilitate working capital loan up to 10,000, to incentive regular repayment, to reward digital transactions, to reward digital transactions, reward digital transactions. Next point, the scheme will help formalize the scheme will help formalize the street vendors, street vendors across India who were severely hit, who were severely hit by the COVID-19 pandemic, by the COVID-19 pandemic. It will open up new opportunities, open up new opportunities to this sector to move up, to this sector to move up the economic ladder, move up the economic ladder, economic ladder. अटल पेंशन योजना,
Pension Yojana. It was launched in year 2015 to create a universal social security system. Universal social security system for all Indians, especially the poor, especially the poor, the underprivileged, the underprivileged, and the workers, and the workers in the unorganized sector, in the unorganized sector. Full stop. It is administered by Pension Fund Regulatory, Pension Fund Regulatory and Development Authority, and Development Authority, PFRDA, PFRDA, PFRDA. Next, the main objective of Atal Pension Yojana, the main objective of Atal Pension Yojana to provide security and protection, security and protection to citizens in the scenario like illness, accidents, disease. This scheme is mainly aimed at the unorganized sector in the country, unorganized sector in the country. फिर लिखना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, PMJDY, PMJDY. It is aimed at direct benefit transfer. It is aimed at direct benefit transfer of subsidy and attain the target of opening. The scheme particularly target the unbanked poor. Targets the unbanked poor. It was launched on 20th August 2014. It is a national mission with an aim to provide access to various financial services, including remittance, credit insurance, saving in an affordable manner, The accident insurance cover, under Jan Dhan Yojana of 1 lakh enhanced, to 2 lakh to new PMJDY, account open after 20th August 2018, 20th August 2018. बस छुट्टी आज, ज्यादा नहीं है आज.
ठीक है, कल होगी अब क्लासेस।